Hello, guys. Good evening. My name is Drishanvik, and my topic for today's presentation is body language, the secret ingredient of effective communication. So, let's start. The agenda for today's meeting is uh, comprises of the three sections. The first section is introduction to body language. Second section is importance of body language, and the third section is the types of body language. So, let's move to introduction. Basically, body language is the use of physical expressions, mannerisms, and behavior to communicate non-verbally, often done instinctively rather than consciously. In simple words, it is meant to the body language is the type of language which is used to convey your words through symbols. People in the workplace uses non-verbal cues rather than words while interacting with their boss, colleagues, or acquaintances. Now, the important part is non-verbal cues. Non-verbal cues basically is as good as handshakes, your expressions, your gestures, and your postures. So nowadays, majority of the people uses non-verbal communication rather than verbal or oral communication. Let's let me show you the exact graph of this particularly. So this is the graphical representation of how these things comes into action. So the people put their weightage into body language is approximately 55%. Through words, it can be 7%, and voice tone it can be 38%. सो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेजोरिटी जो पीपल की है वो सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पे है बिकॉज दे कैन यूज इन टू इट दे कैन यूज इन देयर डेली लाइफ्स लाइक हैंडशेक्स लाइक पोस्चर्स लाइक जेस्चर्स and their facial expressions also and eye contact also. So the second part is importance of body language at workplace. How body language is important when you are working with your colleagues or your acquaintances. So it will increase self-confidence, it will raise your morale and your self-esteem. It is being you as a charming person because if you use your body language effectively, it can make you a charm. It attracts the audience because if you use your body language effectively, it can attract your audience at all also. It can improve your public speaking skills. Like if you use your body language, like you use eye contact, you can use handshakes, you can use your facial expressions thoroughly, then it will improve your public speaking skills as well, and it will improve your workplace etiquettes and your relationship success. Like if you use your body language, like अगर मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को इजीली मूव कर रहा हूँ, अपने आई कांटेक्ट को भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरी एक रिलेशनशिप इंप्रूव होगी किसी दूसरे पर्सन से. सपोज मैं रोहित से बात कर रहा हूँ, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं रोहित से बात कर रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ व्हाइल मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद हिम. तो मेरे जो रिलेशनशिप है, मैं अपने ओपिनियंस को उसको प्रोवाइड करूंगा एंड वो भी अपने ओपिनियन शेयर करेगा एंड वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज. Now, the types of body language. There are two types of body language mainly. One is kinesics and other is proxemics. So let us discuss one by one. Kinesics. Kinesics is basically your body movements, like how you move your body to judge the inner state of your emotions. Like as you seen in the figure, there are different body movements of the persons. Like the first one is I am tired, so he's like this. Okay, and I am sorry is like this, and yes we are in a guilty, like if you commit the mistakes and prove to and commit the mistakes and admit you're guilty, then he's like this portion. So basically this is called body movements, or you can say kinesics. Now the table shows the different kinds of kinesics and their interpretation also. So basically brisk or erect walk. Brisk or erect walk means तेज चलना. तो what it interprets confidence level of your person. Standing with hands on hips, it interprets aggression, like the way you express your thoughts. Like standing with hands on your hips, it will interpret your aggression. Sitting legs apart, like if you sit and your legs are not folded, it is like apart, so it means open, or it means you are open and you are relaxed at the same moment. Arms crossed on chest, it means defensiveness. Hands on cheek, it means you are thinking on something or someone else.
Fiddling with pen, like if you play with the pen continuously, it means you are inattentive to a listener. Like you do not connect to your speaker. Like if you are playing with your pen, it is as good as fidgeting. Fidgeting means you can playing like nodding your head, like it means you are agree or you are disagree. Like हम जनरली हमारे पीपल की आदत होती है कि हम नोट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. लाइक अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप सिंपली जवाब देने की बजाय आप नोट करते हो हेड कि हमें समझ आ गया हो, तो उसका मतलब है कि आप एग्री कर रहे हो. और एट द सेम मोमेंट अगर नहीं आ रहा तो आप यूं कर दोगे और आप डिसएग्री कर रहे हो. तो ये मतलब है इसका. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Proxemics. So basically, it means the non-verbal study of the space and distance, like how you maintain your space with someone else standing next to you. So this diagram shows like a person is standing it and another person is standing to his space. So यहाँ पे ये जो space दिख रहा है आपको 0.5 मीटर का, ये इंटीमेट है. अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपका ये क्लोज फ्रेंड्स हो गए. लाइक अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो आपसे क्लोज है तो उसका जो डिस्टेंस होगा आपसे वो 0.5 मीटर होगा. और अगर आपका खुद का स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, तो वो 1.2 मीटर का होगा. लाइक अगर आप इस सर्कल में खड़े हो तो वो आपका एक पर्सनल स्पेस है. एंड यू शुड नॉट इन्वेड योर पर्सनल स्पेस टू समवन एल्स. लाइक एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल स्पेस एंड यू डू नॉट invade the person to come into your space, right? तो अब यहाँ पे जो थर्ड सर्कल है ये है सोशल स्पेस, सोशल सर्कल, जो आपका सोसाइटी का सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हो गए वो है, जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स है, लाइक. एंड पब्लिक इज रैंडम पर्सन, उसका जो स्पेस होगा वो 7 मीटर का होगा. ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं while maintaining the proxemics. Okay, it means space and distance between you and your person with whom you are conversing. So that's it. Thank you so much. And you can share your thoughts also. How would this session so far? Please, can anyone share your thoughts? How was this presentation going on? Okay, my name is Sumit Sharma. I want to share some thoughts for this presentation also. Yeah. So basically, this PPT is good, and we learn so much from this PPT, and especially body language. Body language play a very important role for communication Yeah. because due to body language, we can see that that person is interactive to talking or not. And especially body language say that what type of behavior that person also. Especially one thing in your PPT, I saw that your personal space, intimate space, so that this is new for me. So basically, thank you so much, Drish, giving me this knowledge. So thank you. Pleasure to be here you in the meeting, right? Because you know very well that body language is the most important part in the communication nowadays, and most of the people put their weightage into body language rather than the verbal or oral communication, because the way you express your thoughts, it speaks something, it speaks bigger, it speaks your body language, like how you converse with them. If you normally like put your thoughts just reading the presentation and put your thoughts without using your gestures and postures, then how could you be a better communicator, right? If you use your body language effectively, and if you are working in a workplace, then it seems like if you use your body language, then your boss will be impressed with you. Because if you are sharing your thoughts like handshakes, you are using your gestures and postures at the same time, then it will be good for you and you are a game changer for the today's marketplace, right? So it will be an essential part of the communication. Sumit. Yeah, sure. Yeah, it is. I missed something. Hello. Drish? Hello. 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 Adarsh, I have a question.
I want to get into public speaking in future. Okay. So I wanted to ask you that when we are on stage and about 1,000 people are looking at us, then Okay. how should be our body language at that time? What are the things that we should take care about, Like and what you we should do? you should maintain your eye contact with the audience, but it is impossible to maintain your eye contact with everyone. तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा? आपको अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको एक ऐसा पर्सन चूज करना पड़ेगा जिससे आप वन टू वन कन्वर्सेशन कर सको. लाइक सपोज इफ आई एम एट द इवेंट एंड आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई वांट टू से समथिंग, राइट? तो मैं एक ऐसा पर्सन पिक करूंगा जिससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा एंड ही विल आंसर माय क्वेश्चन. तो वहां पे जो इंटरेक्शन होगी वो वन टू वे होगी, वन टू वन होगी इंस्टेड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, राइट? ये वन टू वन इंटरेक्शन है. अगर आपके सामने इट डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडियंस, राइट? अगर आपके सामने 1,000 पीपल है तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद एवरीवन. तो आपको वहां पे एक ऐसा पर्सन चूज करना पड़ेगा जिससे आप कंफर्टेबल हो. वो इट कैन बी अ रैंडम पर्सन, इट डज नॉट कन्फाइन टू एनी अदर पर्सन, राइट? इट कैन बी रैंडम पर्सन. आप उससे क्वेश्चंस पूछो जिस टॉपिक से आप आए हो आज बताने के लिए, आप उससे क्वेश्चन पूछो एंड देन ही विल आंसर टू योर क्वेश्चन. वहां पे वन टू वन इंटरेक्शन होगी. ये तो होगी पहली टिप. दूसरी टिप, आपको अपने जेस्टर्स को ओपनली यूज करना है जब आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो. मान लो आपको कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं तो यू कैन ओपन योर जेस्टर्स फुली एंड यू कैन स्टैंड इन अ वे दैट दे सीम्स कि हाँ एक पब्लिक स्पीकर बोल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं. अगर आप अपने हैंड्स को क्रॉस कर लोगे तो वो ये समझेगी कि आप नर्वस हो रहे हो, बिकॉज इट शोज अ साइन ऑफ नर्वसनेस. अगर आप अपने हैंड्स को क्रॉस कर लोगे या एट द सेम टाइम अगर आप पोस्टर में खड़े हो, स्ट्रेट यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड यू जस्ट क्रॉस योर लेग्स, देन इट आल्सो शोज अ साइन ऑफ नर्वसनेस. तो वहां पे ये टिप ध्यान रखनी पड़ेगी आपको जब आप किसी लार्ज इवेंट में या किसी जैसे फॉर एग्जांपल टेडेक्स टॉक्स है, तो अगर आप वहां पे बोल रहे हो तो आपको ये टिप्स ध्यान रखनी पड़ेगी. तो दैट इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. मैं क्या may I add something in this? Hello. May I add shall I something in speak? this? Yeah, you can speak. Ganesh, shall I go? Yeah. Okay, you can go. I will Darshan, take it. Darshan, यस. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पब्लिक स्पीकिंग में बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो जैसे तुमने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे से आई कांटेक्ट बना के और मतलब उसको टारगेट करते हुए हम थोड़ा अपना जो भी कन्वर्सेट करना है हमें वो करें. लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बाकी की ऑडियंस है वो ऐसा फील नहीं करेगी कि हमें लेफ्ट आउट हो गए हैं या फिर एंगेजमेंट नहीं बन पा रहा उनसे? क्योंकि आप अगर आप किसी पर्टिकुलर एक आदमी को देखते रहोगे लगातार. देख ऐसा है कि भाई हाँ, मेरा यही था कि अगर मैं समझ गया तेरा जो क्वेश्चन है, मैं समझ गया. इट इज अ वैलिड क्वेश्चन. देख होता ये कि जो आई कांटेक्ट है ना वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडियंस पे, ये तू मानता होगा. अब जैसे मान ले सपोज अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ और मैं 10 ऑडियंस के सामने कुछ दे रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, तो मैं वहां पे इट इज लाइक अगर मैं एक पर्सन को टारगेट करूँ, इट doesn't seems like targeting, right? एक बार ये सोच कि मैं उस पर्सन से वन टू वन इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो वहां पे वो एंगेज होगा. अच्छा, साइड बाय साइड मैं औरों को भी देखूंगा और औरों से भी इंटरेक्ट करूंगा क्योंकि वहां पे 10 पर्सन होंगे, ठीक है? अब रही बात 1000 पर्सन की, तो वहां पे इम्पॉसिबल होगा कि सबसे कनेक्ट कर पाऊँ और वहां से सबसे बात कर पाऊँ. तो वहां पे एक ऐसा पर्सन पकड़ूंगा जिससे मैं बात कर पाऊंगा और लिमिटेड आई कॉन्टेक्ट बना के रखूंगा ताकि जो बाकी पर्सन है वो भी बोर्ड ना फील करे और मेरा भी जो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन है वो उन तक पहुंच पाए. तो मैं कुछ ऐसे टैक्टिक्स का यूज करूंगा, हैंड एक्सप्रेशंस का, जेस्चर्स का या पोस्टर्स का, ऐसे एक्सप्रेशन यूज करूंगा जिससे वो इंटरेक्ट हो पाए मेरे से. और मैं डिलीवर भी जो डिलीवरेबल्स मैं प्रोवाइड करूंगा उनको वो भी ऐसा करूंगा कि वो एंजॉय करे उस मोमेंट को, लाइक लिव द मोमेंट. बिल्कुल. मतलब यही है कि अगर वन ऑन वन कांटेक्ट भी हो रहा है तो लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि अपन दोनों तरफ दिशाओं में, जैसे लेफ्ट और राइट में लोग बैठे हुए हैं तो दोनों तरफ अपन पॉइंट आउट करते हुए चले ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे. लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि जब आप स्टेज पे हो तो आप अननेसेसरीली मूव नहीं करोगे स्टेज पे, क्योंकि इट इज अ बैड हैबिट ऑफ अ पब्लिक स्पीकर
ठीक है, अगर आप अननेसेसरली मूव कर रहे हो ना, तो वो ये समझेंगे कि आप कुछ भूल रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो। लाइक अगर तू एक जगह खड़ा रहेगा और स्लोली एंड स्टेडली मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा, तो इट इज लाइक हाँ चलेगा ये, क्योंकि तू साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस को भी यूज कर रहा है, तू साथ साथ अपने पोस्टर्स को भी यूज कर रहा है, और तू साथ साथ अपने जेस्टर्स यानी हैंड मूवमेंट्स को भी यूज कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द होल स्पेस ऑफ द स्टेज, राइट? बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ये और है कि क्या बॉडी पोस्चर्स होने चाहिए जब हम अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 लोग हमारे सामने हैं, तो मतलब कैसे हमें स्टैंड होना चाहिए, किस तरह से? I think your voice is breaking in the between. अगर बता सको तो। हेलो भाई उसका सवाल क्या है शुभम भाई का, तो while delivering speech on the podium, so what was the body language like? If you are maintaining eye contact with the public, so at that point of time you also need to show the body language which conveys the message. तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक तो ये होना चाहिए कि जो आपका पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? यू शुड बी स्टैंड स्ट्रेट, लाइक यू शुड नॉट बेंड, यू शुड नॉट फिजेट, ठीक है? और तुम कई बार क्या होता है, पब्लिक स्पीकर ये गलती करते हैं कि कई बार वो बीच बीच में ना नाखून नेल बाइट करने लग जाते हैं, दैट शोज वीकनेस, दैट शोज नर्वसनेस, ठीक है? वो नहीं करना चाहिए। अगर तू खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, suppose if I am a public speaker and I am a communicator and I want to launch some event and I am inviting in the TEDx talks, ठीक है? अब वहां पे अगर मैं नेल बाइट करूंगा 1000 लोगों के सामने, तो वो इंप्रेशन कैसा पड़ेगा? वो ये सोचेंगे कि भाई बंदे को पब्लिक स्पीकिंग का सब कुछ पता है, एंड एट द सेम मोमेंट when I bite my nails and it shows a sign of weakness, it shows a sign of nervousness कि आप कुछ भूल रहे हो। तो यही तो मैंने बताया स्लाइड्स में कि अगर तू अपने चीक्स पे हैंड रख के बैठा, तो इट शोज लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग, तो वो नहीं करना। ये कुछ टिप्स हैं, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं कि इफ यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 1000 ऑडियंस, देन you could follow these tips so that you can communicate your message effectively. Basically, I also want to share some things. When we are in public speaking, and during the public speaking, and we should not use some gestures or some point I want to discuss. First of all is crossed arms or legs. We should not cross the arms or legs. Second point is carrying books or papers across your chairs. If like on the stage, we should not carrying books or papers. Slumped posture, sitting perched on the edge of the chair, wringing hands, tapping foot, rocking legs, drumming fingers, biting nails. Biting nails is a very bad habit during public speaking. That's what I'm saying. Biting nails, fiddling with the jewelry or hair. Fidgeting is a bad habit, because if you fidget, if you play with the pen, if you are sitting, like if you are sitting on a bench and you just play with the pen, you just fidgeting, then it is a bad habit for because you are a communicator and you should manage all the things properly, and you should keep in mind all the tips which I shared to you today. Yeah, sure. Rocking in the chair, this is also bad habit. And clearing your throat too much, straightening your tie. Many person stretching your tie. Okay. Playing with boats. There are actually hands in the pocket. Yes, Ganesh. Sorry, Sumit, couldn't interrupt you in between, but Ganesh wants to say something. Then just mute yourself, Sumit. Yeah, sure. Yeah, actually, there are many habits. I just wanted to tell you, just like in body language, there are leg shaking, which is the hand. He won't move his hand movement. Yes. And also the in eye contact, there are eye staring. We call he will just stare a particular person. We can stare the person continuously. We can stare the person continuously without blinking your eyes. And even the forward person will feel awkward. It is like an extreme case. We can't do anything. So he will feel like, oh, what's the wrong in his? So
That also happens. Vishen, And actually, I was in public speaking. I'm telling to myself because I was with International Club, or Toastmaster Okay, okay. International Club, Great, when I great, was great. in TCS. Great. So it's for made for public speaking. So Yeah. the public speaking is quite a wider topic, because if you want to become a public speaker, as Rohit asked you before, so you Yeah. need to be expert in a particular area. So you need to Yes. identify your strength previously. Perfect. So what topic excites you the most to speak upon, and then you would gradually gain confidence. So once you get confidence is actually what you are in a position to express yourself. And Yes. once you are in a confidence, you will get that confidence. You will Hmm. feel that you will automatically start starting to maintain eye contact. Your body language, yeah, natural body language required. Don't try to just overact. Sometimes people used to overact, like, oh, this is wrong, this is that. Just we Yeah. should have the And the way natural and body the language. and the way you speak, na, this is a kind of body Yeah. language. Because Yes. ये actually most people face challenges in that. कई बार वो Yeah. एक्सप्रेस नहीं कर So पाते अपने थॉट्स, ठीक है। और yeah. रही बात So टाइप्स ऑफ बॉडी and लैंग्वेज की, जो शुभम का क्वेश्चन था, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। वैसे 5 टाइप्स ही है, लेकिन हमने उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया 2 टाइप्स में। वन इज किनेसिक्स, इट मींस बॉडी मूवमेंट्स, एंड अदर इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज लाइक योर स्पेस, योर डिस्टेंस। लाइक अब जैसे तू बॉस से बात करेगा, सपोज इफ यू आर इन अ वर्क प्लेस एंड इफ यू वांट टू कन्वर्स विद योर बॉस, देन हाउ यू शुड मेंटेन योर स्पेस विद दैट, विद हिम। कितना स्पेस रखेगा तो, yeah. क्योंकि वो तेरा पर्सनल स्पेस है ना। अब तेरे पर्सनल स्पेस में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। अगर तेरा बॉन्डिंग उससे अच्छा है, मतलब अगर किसी तेरे फ्रेंड से बॉन्डिंग अच्छा है, तो इट कैन बी लाइक इंटीमेट, लाइक जो मैंने तेरे को दिखाया था, जो मैंने तुम्हें दिखाया था उसमें प्रेजेंटेशन में, तो वो होना चाहिए। Yeah, Drush, can I get just 2 minutes because it's an interruption? So I was about in eye contact. So we You can, can just once you will, complete your question, because the time is running and the meeting can't be extended. It is like I 40 just need minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 Yeah, minutes. yeah. No question, 45 just minutes. given the explanation. You have explained the I things want already. to ask one Yeah, yeah. question. Sure, Yes. sure. Jyoti, you can go. Can I? So, Yeah, yes, yeah, Ganesh, yeah. So You can if speak. let her You can let her speak. speak. Hmm. can I ask? Yeah, yeah. You Sure, can you are ask. good Na. to go. Good to go. no, Acha. 1,000 rupees fine. Arey, So can if we are talking about an particular interview, so I okay. want to know that knowledge is more important or our body language is more important. So, like, it can't Vishen. be said that ki, no, one part is important. Both should be balanced. Both should be balanced equally. Like, you have a knowledge of body language and you want to converse. You want to show your body language to the interviewee, to the interviewer. Sorry, because you are an interviewee and your person is a next to you is an interviewer and he wants to take your interview. So you should be balanced properly. Knowledge भी and body language भी दोनों होनी चाहिए। और वो जो टिप्स है ना, जब तू इंटरव्यू देगी कहीं भी, मान ले किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देगी, और अगर तू अपने हैंड्स को क्रॉस कर रही है या लेग्स को शेक कर रही है, तो वहां पे तेरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो इंटरव्यू सोचेगा कि तू नर्वस हो रही है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू बी सेलेक्टेड इन द कंपनी, राइट। And Okay, अरे भाई 2 thank मिनट तो you. दे दो यार, मेरे को 2 मिनट दिए हाँ नहीं है। जल्दी गणेश जल्दी गणेश भाई, हाँ 5 मिनट बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ 2 मिनट। एक्चुअली क्या है कि मैं आई वाज अबाउट टू मीन्स आई कांटेक्ट पे जाना है, सो वेयर वी कैन नेचुरली मेंटेन आई कांटेक्ट। बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली 90% एक्चुअली, वर्ड्स आर 10%, द बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर एक्चुअली। And one more thing I would like to ask, add here. So sense of humor is also a good thing, because and you need that observation to observe the public actually, how they are reacting. Are they really listening or just sleeping by listening you? So you need to find them if they they are interested or not. Their faces will talk a lot. You need to identify that also, and you need to connect with them. You need to create a connection by just putting two-way communication, like asking questions meanwhile. It makes them feel like connected. So these things matter, because I was in that field. I know very well. And even if you see, my friend is also having means he's a Indian in India. He is a best the public speaker in India. He got the award also on that platform. And his YouTube channel has more than 1 lakh followers. You can see millions of views also. Yeah. And So Atul, you can speak. I think you are left. You can speak.
like just 3 minutes left, and you can share your thoughts on this particularly. Drishan. Hello. Yes, yes. Yeah, this was a very great session, Rishan. Thank you so much, Atul, I for gained a lot of being information always. from your session. Friend, guys, this is he's my Was best it friend. fiction? He's my best friend. Drishpiration. Okay. Drishpiration. Yeah, yeah. Yes, Atul, you can speak. Yeah, regarding some questions. Yeah. Regarding some, yeah, you have a, if you have a question, then you can you good to ask to me, and I will answer your question. Otherwise, you can Okay. just send me the question, and I will answer to you. Okay, because this meeting time is like shooting. Okay, then I'll send you later on. Okay, okay. Yeah, Shubham. Actually, my question is a little bit long, so time is running out. I will ask in another meeting. Yeah, I can host the meeting tomorrow. I have another session tomorrow, and there I would invite to you, and we will have a healthy discussion. Sure, ठीक है? sure. ओके, ठीक और है, फिर मैं वो वहाँ पे मैं गूगल मीट पे करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है? ठीक है। हम्म। चलो फिर So, एंड करते हैं। so चलो guys, take care, bye bye. Take care, bye. Bye bye.